Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Monty and you're watching Mystic Sources. So today we will be doing a picker card tarot reading, and this is going to be a very specific reading for all of you. If you are in a career crossroad, if you are facing some kind of career dissatisfaction, and you are planning or you are at the verge of quitting your current career, so this particular reading is for you. What you need to know before leaving your current career. Okay, so दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. अगर आप लोगों को लग रहा है कि नो, योर करेंट करियर में आपको एक डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है एंड यू हैव दैट अर्ज टू लीव द करेंट करियर ऑप्शन, सो स्पिरिट वांट्स यू टू टेक एन इन्फॉर्म चॉइस. एक इन्फॉर्म चॉइसेस लेना बहुत जरूरी होता है, so that you know what is the core reason that you are feeling that urge that you need to quit this career. Sometimes हमें core reason समझ में नहीं आता. We actually quit one career and then we choose another career which eventually create the same experience. Okay, so the reason behind this reading is, be clear why you are feeling that urge to quit the career. Okay, what is the reasoning why you're feeling this way? So once you deep dive into the reason behind it, okay, you understand why this career did not work for you, or why this career is giving you this kind of a feeling that you want to quit, so that next time when you make a choice, you keep this reasoning in your mind. So, what you need to know about your career, right? What you need to know about leaving your current career. This is the topic. What you need to know about leaving your current career option. Okay, so this is the specific reading, and um, I just downloaded this particular topic because इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा था इस मैसेज को डाउनलोड करने के टाइम पे. व्हेन आई वाज डाउनलोडिंग द मैसेज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. once I hear that what they need to know about leaving their current career option, and initially I felt very uh, uncertain about the message, and later on I understood what is the reason that I got this intuitive guidance that make a reading on this topic. Okay, so many of you will get benefited. कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या जानना चाहते हैं. Okay, तो दिस पर्टिकुलर रीडिंग आपको हेल्प करेगी समझने में कि क्यों आप इस पर्टिकुलर करियर में फिट नहीं हो रहे हो. क्या रीजन है कि ये चॉइस आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है. कभी कभी हमें जब नहीं समझ में आता है ना कि व्हाई वी आर फीलिंग डिससैटिस्फाइड, हमें रीजन समझ में नहीं आया, तो हम नेक्स्ट जो करियर ले लेते हैं विदाउट डूइंग द रिफ्लेक्शन. हम सेम ही चॉइस बना लेते हैं. बाद में हमें पता चलता है कि ओके, अगेन आई एम फेसिंग द सिमिलर सिचुएशन, अगेन आई एम फीलिंग बैड अबाउट द चॉइस आई मेड. क्यों? क्योंकि आपने रीजनिंग में डीप डाइव नहीं करा. तो दिस इज अ वेरी डीप मैसेज, राइट? सो I hope many of you will get benefited uh, by this reading. And whenever you find this video has will give you a message, and because it is a timeless reading. And of course, remember, it is a collective reading, so pick what resonates with you and leave the rest. Do not try to fit into the situation forcefully. Okay, and और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर करियर में स्ट्रगल या करियर चेंज के कगार पे आप खड़े हो, ओके, एंड इट इज योर बर्निंग प्रॉब्लम, राइट, ये आपका प्रॉब्लम है, राइट, तभी इस रीडिंग को देखिए. अगर ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आप फेस नहीं कर रहे हो, पर जस्ट बिकॉज यू वांट टू वॉच अनदर पिकर कार्ड वीडियो, और आपको लग रहा है मैं देख लेट्स चेक कि वेदर मेरे लिए कोई गाइडेंस है कि नहीं, तो ये आपके लिए इरेलीवेंट होगा. ठीक है,
इफ ये पर्टिकुलर सिचुएशन के थ्रू आप जा रहे हो, ये कांस्टेंट क्वेश्चनिंग आपके दिमाग में चल रहा है, आपके लाइफ का ये बर्निंग प्रॉब्लम है कि आप एक करियर क्रॉस रोड में खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आपको ये पर्टिकुलर करंट करियर सिचुएशन क्विट करना है, क्या करना चाहिए, ऐसे कंफ्यूजन है, तभी रीडिंग को देखे। अदरवाइज टैरो रीडिंग, इररिलेवेंट टैरो रीडिंग देखने से आपका टाइम ही जाएगा और एक एडिक्शन में आप पड़ जाओगे। अगर ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं है अभी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ओके? डू समथिंग प्रोडक्टिव, ओनली वॉच दिस रीडिंग इफ दिस इज योर प्रॉब्लम, ओके? सो नाउ लेट्स वी प्रोसीड। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चीज बैलेंस में करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोई भी चीज अगर आप एडिक्टिव बिहेवियर में पड़ जा रहे हो एंड वो अगर आपसे आपका कंट्रोल छीन ले रहा है, तो अंडरस्टैंड, आपको वहां पे बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है? बी इट अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बी इट एनी अदर प्रैक्टिस, बैलेंस में, मॉडरेशन में सब कुछ करना चाहिए, ठीक है? एक्सेसिव कोई भी चीज जो अगर आपको कंज्यूम करने लगे, उससे हमें डिटैच होने की जरूरत है, ठीक है? आई डू नॉट नो हु नीड टू हियर इट, बट दिस इज अ मैसेज फॉर समबडी, अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्टिव सिचुएशन में पड़ रहे हो तो, ठीक है? तो लेट्स वी डीप डाइव इनटू योर रीडिंग, ठीक है? मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड। And for personal reading, healing sessions, you can reach out. The WhatsApp number is given in the description. Let's we see. Let me shuffle the cards. Pile A, pile B. Okay, यहाँ पे दो पिक कार्ड्स है, ये है, this is pile A. Oh, this is pile B. Okay. Now, take your time, focus on your breathing. ठीक है? Randomly पिक मत कीजिए, थोड़ा सा अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें, ठीक है? 4-7-8 ब्रीदिंग कर सकते हो आप, बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो, देर आर मेनी रिकॉर्डिंग अवेलेबल, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस अवेलेबल। ब्रीदिंग पे फोकस करें, अपने ब्रीदिंग को काम डाउन करें, तब आपको इंट्यूशन चैनल होता है, ओके? जब आप बहुत रेस्टलेस रहते हो, आपके फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन रहता है, तो जब भी हमारा फ्लाइट एंड फाइट मोड ऑन रहता है, रेस्टलेस आप रहते हो, आप इंट्यूशन को चैनल नहीं कर पाओगे, ओके? इंट्यूशन को चैनल करने के लिए आपकी ब्रीदिंग को आपको स्लो डाउन करना होता है। तो पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग पे फोकस करें, राइट? ब्रीदिंग को काम डाउन करें आप, और वंस यू फील यू आर सेटल्ड, देन पॉज द वीडियो, फोकस ऑन द कार्ड्स। जो भी कार्ड की एनर्जी आपको सबसे ज्यादा पुल कर रही है, ठीक है, उस कार्ड को आप पिक कर सकते हो, ठीक है? तो इफ यू आर डन, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और आप डायरेक्टली अपने रीडिंग को देख सकते हो, ओके? लेट्स we start the reading. We'll start the reading with pile number A. This is pile number A, this is pile number B, okay? Let's we proceed. Okay, pile number A, if you pick this pile, okay, uh, what you need to know, pile number A, before you leave your current job or current career option, ठीक है? Why your current career option is not um, making you feel happy, it's not giving you soul satisfaction, okay? Pile A, what you need to understand कि you could have changed your career multiple times, you could have changed your role, okay? You could have changed companies, uh, and you may have
figured out that even if changing multiple companies or roles or designation or maybe project, nothing is making you happy. Maybe many of you has changed location, right? But maybe you actually hoped that changing a career, changing a project, changing a company will make you happy, but nothing is making you happy. Okay, I feel many of you are again feeling that grass is greener on the other side. If I make another change or switch to some other company or maybe do some other certification or maybe change a location or maybe go to what abroad, things will change. Okay. But what you need to know, pile number A, that the constant feeling of that lack, that dissatisfaction, that void is coming from some kind of unfulfillment. Okay. Very, yeah. So I feel that many of you are feeling like this because of deep down you're emotionally not satisfied, you're unhappy. मे बी यू पीपल आर फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, एक कॉन्फर्मिटी आ गया है, एक स्टकनेस आ गया है. यू मेनी ऑफ यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन. ओके, आप अपने तरीके से कुछ काम करना चाहते हो. यू वांट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच और मे बी you want to work in your style. In your style, that means you do not want any restrictions, you do not want any 9 to 5 job, you want to do something of your own. You want independence, you want freedom, but you're not acknowledging it. Many of you are lying to yourself. आप खुद से झूठ बोल रहे हो. You are deceiving yourself because you, if you confront your true desire, your heart desire, you need to reconsider your life plan. पहले many of you have reached to certain position, to certain designation, जहाँ पे it took you lot of courage, lot of time. You have built something, and if you now acknowledge the void, constant dissatisfaction within you, you fear that you might lose everything that you have created. But what you are not understanding, पहले जो पकड़ के आप जीना चाहते हो, all these things are illusion. You thought that achieving these things will give you happiness, but after achieving and all those material success, all those pleasures, you're understanding that you're still empty. All these things cannot make you feel happy. Maybe many of you thought that if I achieve that thing, that I will be able to um, prove my family member or prove my close friends or mm, my parents that, see, I have achieved so many things. Maybe material success, maybe some of maybe for many people, um, you have created some kind of life where uh, people are appreciating you, that my son or my daughter has reached certain um, goal, they have achieved some kind of promotion or respected designation. But only after achieving all those things, your void is increasing day by day, and now you cannot ignore it. Now your inner voice is so loud that it is shouting from inside you that this is not what I want and I'm not happy. ये रीडिंग मुझे रिमाइंडर दे रहा है. Many time ago I watched a video, an interview of Ritik Roshan. So Ritik Roshan was saying that किसी ने उनको बोला था कि after you achieve some kind of success in Bollywood, you will be finally happy. And after achieving all those success, money,
he realized that he is still unhappy, he's still not satisfied. And then he needs to he actually needed to reconsider his life plan. He actually sit down and do some kind of reflection that what happiness look like for him. Success is not happiness, he realized then. So for many of you, I feel you people are going through some kind of similar kind of situation, that you lack fulfillment, that contentment is not there. You could be feeling lost, you could be feeling emotionally overwhelmed. For many of you, I feel you could be missing some kind of a person जिसके साथ you used to feel very happy, very content. um, वो पर्सन आपको अलग तरीके से समझता था, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता था, और मे बी वो आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है, आपके करंट लाइफ के सिचुएशन से, आपके इर्द गिर्द में जैसे भी लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके फैमिली मेंबर से, मे बी व्हेन आप उनको बोल रहे हो कि आई एम नॉट हैप्पी, दे आर क्वेश्चनिंग यू, व्हाट एल्स यू नीड, यू शुड बी हैप्पी, बट यू तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आई शुड बी हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी. So maybe you are missing some friend. It could be a friend, it could be a potential love partner, romantic partner. Okay, जो आपको शुड कुड में नहीं बांधता था, जो आपको एक्सेप्टेंस देता था कि या you can have everything but you might not be happy, and this is what it is. You do not need to force yourself to feel in a certain way, राइट. सो सोसाइटी में ये होता है कि जब हम बोलते हैं कि वी आर फीलिंग इन अ सर्टेन वे, तो कभी कभी ऐसा चीज होता है कि पीपल दे डिसमिस आवर emotion, they dismiss our feelings, they immediately try to fix us. You should be feeling like this, why you are feeling like this, we are feeling like this. There could be deeper reason, right? Pile A, I feel many of you have realized, or you are at the verge of realizing the truth about you, that आपने सोचा था कि achieving certain things in life will give you happiness, contentment, but after achieving all those things you realize that no, you're still empty, you're still unhappy. ठीक है? And for many of you, I feel कि um, you want to become a parent, you want to have a um, you want to become parent, you want to give birth to a child, or you want to uh, become a parent of a pet maybe, and but you are not acknowledging it because of your own fear could be, but the void you are feeling inside, and the even if the changing career is not able to give you that fulfillment, because you want a different kind of emotional fulfillment. Okay, and for many of you, I also feel that this void will lead you to certain career option, or maybe you discover some kind of a hobby which will align you with your true purpose, which will align you with your heart, that that will nurture your inner child. Apaile, I feel ki I can connect with you, because exactly I used to feel similar way 3 साल पहले, right? 3 साल पहले I went through a similar emotional uh, roller coaster, because I was changing job after jobs, I was changing different designation, but I realized that nothing can make me happy. I changed my location, okay, I changed my company, but I understood that constant feeling of dissatisfaction was there. Then I actually took a time for me to understand what I really want, why I am feeling this way. And then I understood that my heart actually pointing me towards my spiritual healing work. Okay. And once I realized, I acknowledged that soul desire, that heart uh, desire of mine, and I accepted that truth.
इनिशियली आई वॉज फाइटिंग. ओके, जब आप अपने सच्चाई से फाइट करते हो ना, आप डिनाइल में रहते हो, बिकॉज यू पीपल आर इन डिनाइल. मेनी ऑफ यू आर इन डिनाइल. यू मे बी मेनी ऑफ यू, बहुत weird है. Many of you could want to become a parent. You want to have a child. It could be a human baby. It could be a pet. Okay, but आप उस चीज को डिनाई कर रहे हो. Many of you want to start your something of your own. आप अपना कुछ हॉबी हो सकता है आप लोगों का ऑलरेडी है, और मे बी you need to discover your hidden potential. बट आप ना क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सक्सेस अचीव कर लिया, बहुत साल आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो यू do not want to reconsider your life plan, and that is why you are struggling. Many of you, I feel कि ये career reading तो है, पर it is also related to some kind of romantic involvement, क्योंकि career reading में बहुत सारे कब्स कार्ड का आना, क्योंकि मुझे ये 2-3 सिनेरियोस बहुत ज्यादा पिक हो रहा है कि for many of you it is actually you need to confess some kind of truth that you are not accepting. ठीक है, सो मे बी आप लोगों ने करियर अचीवमेंट में अपने आप को फंसा के रखा था. यू थॉट दैट आई एम माई करियर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड आई नीड टू डू दिस एंड दैट आफ्टर अचीविंग लॉट ऑफ थिंग, बट नाउ यू रियलाइज दैट स्टिल देयर इज एन एम्प्टीनेस, यू देयर इज अ डिससैटिस्फैक्शन, और आप उससे भाग नहीं सकते. कुछ लोगों के लिए इट इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ पार्टनर, सम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको आप बहुत मिस कर रहे हो, जो आपको एक्सेप्टेंस देता था, जो आपको मोटिवेशन देता था, जो आपको इंस्पायर करता था. मे बी यू शेयर्ड सम काइंड ऑफ योर ड्रीम रिलेटेड टू योर हॉबी. कोई एक हॉबी और करियर ऑप्शन आपका हो सकता है जिसके बारे में आपने इस पर्सन के साथ शेयर करा था. वो पर्सन आपको एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करता था, ठीक है, एंड यू आर मिसिंग दैट पर्सन, बट यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग द ट्रूथ. सो मेनी ऑफ यू, बहुत लोगों के केस में ये इंसान से आपका कुछ करियर का इंस्पिरेशन कनेक्टेड है, ठीक है. हो सकता है ये इंसान का ना होना और आपके लाइफ में अभी जो फिलहाल जो एब्सेंस है उस इंसान का, उससे आपका एक आपको एक ट्रिगरिंग हो रही है, इमोशनल ट्रिगरिंग हो रही है, जिससे यू विल सून स्टार्ट टू डिस्कवर who you what you really want from your soul level. और ये सिर्फ ये नहीं होगा कि what you really want in case of your romantic involvement, ये भी होगा what you really want for your career. आपका दिल क्या चाहता है. दिस इज इंटर रिलेटेड पाइले, दिस इज इंटर रिलेटेड फॉर मेनी ऑफ यू, ठीक है. कुछ लोगों के लिए दिस इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. कुछ लोगों के लिए इट इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग रिलेटेड टू करियर, जहां पे यू विल फिगर आउट योर सेल्फ एक्सप्रेशन, योर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, how you want to show up in the world. See, I was fighting with my creative expression. I was denying my creative expression that I am a born healer. This is my gift. मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की. I actually by birth I was very intuitive. मेरे साथ बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते थे बचपन से ही, पर I never really recognized this thing. I never really acknowledged that as a gift of mine, and I tried to fit in. Okay, I tried to fit in. I did corporate job for 6-7 years, and for changing career, changing company, changing location, nothing worked for me. Okay, the void was still inside until I accepted the truth. I disconnected from everything, and I spent alone time. I spent time in solitude just to figure out what I really want. So, Pile, just disconnect yourself from your surrounding, your old friends, your maybe your parent, your partner, whosoever it is. क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है. आइसोलेशन में जाइए, जस्ट टू हियर योर ओन वॉइस. वीर में हमें हमारी खुद की आवाज नहीं सुनाई देती. सो पाइले, the only way you will be able to understand what your heart really desire by self isolating yourself. Okay, and you need to accept some kind of hobby, some kind of interest, or you need to rediscover an hidden gift of yours,
एंड दैट इज वाई आपको एक्सेप्ट करना है. Do not force yourself that I should feel this way, I should feel that way. If you are not feeling in a certain way, accept that I'm not feeling in a certain way. There has to be a reason why I'm feeling in a certain way. See, in our society, uh, और या हमें ये सिखाया जाता है कि you need to live your life by your logic. Okay, so we kind of dismiss our emotion, but our emotion actually tells us how we are feeling inside. It is very important part, right? If you keep on suppressing your emotion, you will feel miserable. Your emotion is communicating something about your heart's desire, about your body, right? See, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, ठीक है? Every time if you want to डिसाइड, ठीक है, आपको किस इंसान के साथ मिलना है, लेट्स से आपको किसी इंसान के साथ मिलना है कि बात करना है, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या आप सोच रहे हो कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही होगा, आस्क योर बॉडी विल एक्चुअली गाइड यू. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, कुछ टाइम के लिए डीप ब्रीदिंग लीजिए, ठीक है, अपने आप को काम डाउन कीजिए, आस्क योर बॉडी, please guide me, should I talk to that person? Your body will let you know whether you're ready or not to talk to that person. ठीक है, अगर आपको बहुत टाइटनेस या कुछ टाइट फील हो रहा है, तो दैट मीन this is not the right time to talk to that person, or maybe you should give yourself enough time before you talk to any person. And अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एक normal neutral feel हो रहा है, right? That mean your body is guiding you, your nervous system is guiding you that yeah, you can go ahead and talk to that person, right? Or maybe this person has something to offer you, or maybe it is safe, right? So ऐसे हमारी बॉडी हमें रिस्पॉन्ड करती है. सो आस्क योरसेल्फ, अगर आपके दिमाग में कोई हॉबी है, ठीक है, जिसको आप एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, फाइन, सिट विद इट, थोड़ा ब्रीदिंग पे फोकस करें. अभी आपका जो करंट करियर है, अपने आप से पूछे, should I stick to that job after doing the deep breathing? Should I stick to that job? Should I pick that job? Should I continue that job? And then allow your body, allow. दिमाग क्या करता है, कभी कभी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, दिमाग से नहीं, दिल से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. अलाउ योर बॉडी टू गिव यू दैट आंसर, अलाउ योर बॉडी टू गिव यू दैट नज. अलाउ करना अलग बात है, और दिमाग से जब आप मेंटली आंसर देते हो ना, वो लगा दे, वो मैनिपुलेशन है. ओके, अलाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड यू. फील वेयर यू आर फीलिंग एनी सेंसेशन. कैसा सेंसेशन है, टाइटनेस है या एंजाइटी फील हो रही है, क्या पीसफुल फील हो रहा है? योर बॉडी विल गिव यू दैट आंसर. एंड देन अगेन, इन केस ऑफ योर हॉबी जो आप एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, आप अकेले बैठ के करो, आपको दुनिया में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. You sit with it. Ask your body, should I follow that hobby? Should I uh, take this hobby as my career? What I need to know about starting a career uh, related to my hobby? And then allow your body give you that answer. If you feel peaceful, calm, that means your heart is guiding you towards that path. इट इज अनदर वे. हाँ, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर बॉडी कम्युनिकेट्स, बिकॉज हमें ना सोसाइटी ने एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिसीजन लेना सिखाया, विच इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ये आपके लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता. आपको कभी ना कभी इंट्यूशन को फॉलो करना सीखना चाहिए, बिकॉज you only know who you are. Nobody can tell you who you are. Nobody can tell you what your purpose is. Only you can discover it. So learn to communicate with your heart, learn to communicate with your soul. Now learn to communicate with your body. Your body knows everything about you, whether you're ready to do something, whether this person is right for you, whether this is the right time to talk to that person.
योर बॉडी पर। आप दिमाग से जब भी ऑपरेट करते हो तभी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी सी, कभी देर इज अ टाइम व्हेन वी नीड टू फॉलो आवर इंट्यूशन, देर इज अ टाइम व्हेन वी नीड टू फॉलो आवर इंटेलेक्ट। इंट्यूशन और इंटेलेक्ट दोनों को बैलेंस करके चलना है। पर आई फील पहले द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग योर इमोशन, यू आर lying yourself, okay? And you need to, आप ब्लॉक कर रहे हो आपका जो इंट्यूशन जो आपको गाइड करना नहीं, you're blocking that. Ace of Cups is telling me that universe is offering you a new beginning. For many of you, even if it is a career reading, for many of you it is a opportunity to start something, some kind of relationship with someone, okay? Universe is guiding you that there is an opportunity of new beginning. Universe is guiding you, there is an opportunity to start some kind of new career, or discover your self expression, discover your true interest. Self expression ये है कि कैसे आप दुनिया को आइडेंटिफाई, दुनिया में चाहते हो कि लोग आपको आइडेंटिफाई करें, आप उसको डिस्कवर करने का अपॉर्चुनिटी है, पर यू आर रेजिस्टिंग इट। आपको डर लग रहा है, आप रेजिस्ट कर रहे हो इस चीज को। सी ये चीज होता है हमारे साथ भी। आई वॉज ऑल्सो इन अ डिनाइल कि मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है। इफ आई टेल यू माई सेल्फ एक्सप्रेशन इज, my creative expression is, sorry, my creative expression is, I'm a healer. I identify myself as a healer, as a uh, medium, psychic medium, as a intuitive healer, right? So ये मेरा self expression है, this is who I am. मुझे कोई, I do not need to wear a mask to fit into in this community. This is who I am. This is my nature, right? जैसे क्या है कि a fish is designed to swim, a bird is designed to fly. एक आर्टिस्ट का क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या है? That person is an artist. That is his creative expression. So many of you are denying your creative expression, or you are not accepting that hobby or that gift that you're born with, and you're trying to fit into that superficial career जो आप सोसाइटी के लिए वैलिडेशन देता है, जो सोसाइटी में एक पोजिशनिंग देता है आपको, और इसीलिए आपके दिल और दिमाग के बीच में एक जंग छिड़ गई है। And now you are standing at the verge that you cannot pretend to be someone else. You are done. ये जो अंदर तूफान आप लोगों के चल रहा है ना, वो इसलिए चल रहा है कि आपको अपने ट्रू एग्जिस्टेंस को डिस्कवर करना है, हु यू आर, और क्या आप हो उसको एक्सेप्ट करना है। यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ विथ योर पर्पस ओनली बाई एक्सेप्टिंग एंड अलाइंग योर ट्रूथ। सच बोल दो अपने आप को बस। जैसे मैंने आपको प्रीवियस प्रैक्टिस बताया, बैठो उसके साथ, एक दिन नहीं हो रहा है, 2 दिन नहीं हो रहा है, कंटिन्यू करो। आपका बॉडी आपको बताएगा कि व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। नहीं तो एक जंग जो छिड़ गई है ना, ये आपको परेशान करता रहेगा। मैं बोल रही हूँ, आई हैव बीन थ्रू दैट। ये जो परेशानी है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है दिल और दिमाग के बीच में, आई हैव बीन थ्रू दैट। वी नीड टू एक्नॉलेज आवर ट्रूथ, वी कैन नॉट प्रिटेंड एंड लीव आवर एंटायर लाइफ। हमारा मास्क गिरना ही है, ओके? एंड पहले नाइट ऑफ कप्स, फॉर मेनी ऑफ यू कि यू, फॉर मेनी ना, फॉर ऑल ऑफ यू देयर इज अ गाइडेंस दैट एक्सेप्ट योर गिफ्ट। अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट करो, अपने हार्ट के साथ कम्युनिकेट करो, अपने इमोशन से भागो नहीं, ठीक है? एंड what is your desire? Do you want to become a parent? Do you want to have a baby? Do you want to have a pet? Or do you want to reach out to some person जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, और पर you are holding yourself back because you fear rejection? और कोई एक करियर ऑप्शन है आपके दिल में ऑलरेडी, आपके अंदर एक बार बार अर्ज होता है, पर यू लैक करेज, यू फियर दैट व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ, ये जो आइडेंटिफाई करते हो आप अपने आप को इस पर्टिकुलर करंट करियर से, अपने आप को आपने एक टैग दे दिया है कि दिस इज माय आइडेंटिफिकेशन, बट नो,
नथिंग इज योर आइडेंटिफिकेशन, दिस इज योर इल्यूजन. आपने अपने आप को इल्यूजन में कॉट करके रखा है. दिस इज अ फॉल्स इल्यूजन. मैंने भी किया था अपने कॉर्पोरेट जॉब में. आई थॉट दैट इज माई आइडेंटिफिकेशन, बट इट वॉज नॉट. सो जब हम बहुत ज्यादा टू अटैच्ड हो जाते हैं कि हमारे अचीवमेंट से, ताकि सोसाइटी में हमें एक पोजिशनिंग मिले, सोसाइटी में हमें एक एक्सेप्टेंस मिले, बट डीप डाउन वी आर rejecting that part which really wants us to follow our purpose, follow our soul desire. It creates a problem. So, Pile, your guidance is to acknowledge what you really want. Ask yourself question, what I really want to pursue. मैं क्या चाहता हूँ? What my soul is guiding me towards. Ask yourself and you will get the answer. And allow the answer to come in. देखो, जब क्वेश्चन करो ना, बार बार क्वेश्चन करो एंड ट्रस्ट दैट आंसर इज कमिंग ऑन योर वे. थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आप जब अटैच रहते हो कोई क्वेश्चन के साथ, आपको आपको आंसर तुरंत नहीं मिलता. बट वंस यू शिफ्ट योर फोकस, किसी के थ्रू या कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल जाएगी. ओके, बट यू नीड टू अलाउ द आंसर कम इन. स्टॉप फाइटिंग योर इमोशन. स्टॉप डिनाइंग योर ट्रूथ. अपने आप को डिसीव करना बंद करें और अपने आप को जो ये दिल बहलाने के लिए आप प्लेजर में या एक्सटर्नल जो डिस्ट्रैक्शन में फंसा रहे हो, उससे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा. दैट विल मेक योर सिचुएशन वर्स. डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, right? Do not caught up into illusion because it is not working for you. You need to acknowledge your truth. You need to acknowledge your purpose. You need to acknowledge your heart desire. Follow your dream. And if you do not know what is your dream, ask your heart. Your heart knows it. Okay, so pile number 8 was your this was your reading. So अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो जॉब या करियर चेंज करने से पहले ये रिफ्लेक्शन करना बहुत जरूरी है. और एल्स even if you will change the career option, you will feel the same void within you. And if you want to work one to one, if you want to rediscover your hobbies, your creative expression, you can reach out. The WhatsApp number is given in the description. And I will see you next. Pile number 8. Bye. Take care. Hello, Pile B. If you have chosen this particular card, this is your reading. What you need to know about leaving your current career option. Okay. So, pile B, I feel for many of you, there could be some kind of manipulation going on, some kind of power play going on, some kind of domination going on. It could be related to some kind of toxic environment, some kind of work culture, which is actually mm, affecting your emotional well-being. It could be related to some kind of colleague or boss, some kind of team member, some kind of team leader could be there. और किसी के साथ आप काम कर रहे हो, that person is very dominating, and it could be if you are in a business, it could be your partner or some other person who is there, and this person is very dominating. They are inconsiderate maybe, and you feel unheard. आपको लग रहा है कि आपके बातों को कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, और मे बी ये इंसान आपको बहुत ज्यादा चैलेंज क्रिएट कर रहा है. ओके, मे बी दे ओवर पावर यू, दे डोमिनेट यू, दे कंट्रोल यू, दे क्रिएट constant obstacles. You may be feeling judged, and maybe some kind of harassment is going on. ये ओके, एंड आपको हेल्पलेस लग रहा है इस करंट करियर में. ठीक है, नाउ ओके. So I feel many of you are sticking to this job, particular job, maybe because of money, of course, the money, or could be आप लोगों का बहुत सारा लोन या बहुत सारे जगह पे आपका ऑलरेडी डेप में हो आप, जिसके लिए यू वांट टू have more money and you cannot quit the job.
immediately, but that is why you're sticking to that job. Okay, right? So money is a very big thing for you, and it is the only driven factor that you're sticking to this job, because you need to pay bills, you need to pay for your loans, and that is why you are continuously feeling powerless in this environment. You are feeling, even if I'm doing so much, this person is making me feel that I'm inadequate, I'm not enough. Okay, so pile A, B, this is a very specific message for you. I feel that it is a very clear message for many of you, that only mm, changing a job without healing this powerlessness, this helplessness, this people pleasing attribute of yours will not work. I feel for many of you, आप लोगों का ये constant problem हो चुका है कि आपने पहले भी टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट ऐसे फेस करा है, जहाँ पे आपने जितना भी अपने पोटेंशियल से बाहर जाकर, अपने एबिलिटीज के बाहर जाके भी आपने काम दिया है, पर यू नेवर receive that appreciation. Why it is coming, it is happening, it is happening because of your childhood wounding, something from your past. Many of you could have a very difficult or challenging, sweet and bitter relationship with your mother, और फॉर मेनी ऑफ यू हो सकता है कि फादर के साथ भी आपका ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, पर whosoever the person is, the person has a very feminine energy, and ये इंसान आपको, जो भी आपका ये पेरेंट फिगर है, क्योंकि बहुत लोगों के केस में मुझे क्लियर लग रहा है इट कुड बी अ फेमिनिन फिगर, ठीक है, ये हो सकता है आपकी कोई मदर फिगर हो सकते हैं, ठीक है, इट कुड बी मदर और सम काइंड ऑफ केयर टेकर हु इज अ वुमन, ओके, बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि there there could be a, it could be a man who has a very feminine energy. Okay, so ये कोई एडल्ट फिगर है आपके लाइफ में, आपको ये जो एडल्ट फिगर है उनके साथ आपका हमेशा ऐसा ही एक इमोशनल रिलेशनशिप था, जहां पे आपको हमेशा फील हुआ है कि आपको अपने एबिलिटीज के बाहर जाके करना है, उनसे अप्रूवल, उनसे एक्सेप्टेंस पाने के लिए, राइट? ठीक है, यू ऑलवेज फेल्ट लाइक when you are a child, you always felt like, even if when you are a grown up adult, but the struggle was same. You thought that changing the location, mm, mm, changing my hometown will solve the problem, but because that pattern you have not healed, that pattern of people pleasing, that pattern of looking for external validation, that pattern of not having a healthy boundary, right? The pattern that you do not appreciate yourself, but you always push yourself to cross your boundary, you push yourself that I need to do something, even if it is beyond my capacity, to please and to prove others that I am worthy. That pattern is yet not healed. That is why, even if you, many of you could have changed the location, you have leave your hometown, you are settled, you have already settled somewhere else, but you attracted a boss, or maybe a colleague, or maybe a um, team partner who is making you feel powerless, who is making you feel, who is triggering your feeling of inadequacy, that you are not enough. Why? That you need to heal that pattern, the emotional conditioning, which is you have been carrying from your childhood. And leaving the job will not solve the problem. I feel बहुत लोगों ने इस ग्रुप के, बहुत लोगों ने करियर चेंज भी करा था, पर आपका एक बॉस के साथ या टॉक्सिक एक कलीग के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत कांस्टेंट था, ठीक है, आपके लिए चैलेंजिंग रह चुका है। क्यों रह चुका है? क्योंकि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट इज योर pattern, subconscious pattern, that you need to heal. You need to heal your pattern of people pleasing, you need to heal the pattern of seeking external validation, which you keep on seeking because you want to feel good about yourself only when other person appreciate you, and you do not appreciate yourself. You always overburden yourself with excessive responsibility. So pile B, it is a very clear message that अगर आप job change करने का भी सोच रहे हो, you understand, you will
attract the similar kind of situation until this wounding you won't heal. Okay, right? This is related to your inner child wounding, Pile B. You fear rejection. So that is why, just to get acceptance, just to get validation, you entertain toxic behavior, unhealthy behavior of people. This is the time you need to take stand for you. Your external reality is just an a reflection of your inner world. Your relationship with you is you need to heal, and you will see either the boss will change, right, or either that person in your workplace, this person's behavior towards you will change. So running from your parent or running from that family member who always made you feel helpless, who always made you feel that you are not enough, you are not important, will not solve the problem. It is your pattern. Even if you run from that person, even you distance from that person, you will attract another people in your life who will trigger that emotional wounding, because you need to heal that pattern. You need to do the inner work, you need to do the healing work. Okay, why you give away your power to some external person or people just to feel good about yourself, right? And pile B, what you're resisting is, you're resisting your growth. मे बी मेनी ऑफ यू, आप लोगों का जो पोटेंशियल है ना, आप उससे बहुत कम आप आपने अचीव किया है अपने लाइफ में। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग हैं परफेक्शनिस्ट हो, आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, यू नो, बट आपका इतना हार्ड वर्क जरूरी नहीं था, क्योंकि आपको एनर्जी वर्क की जरूरत थी। इट इज नॉट द हार्ड वर्क, इट इज द स्मार्ट वर्क। एंड व्हेन यू टेक एन एक्शन विच इज अलाइंड विथ योर सोल, एक सही एनर्जी के साथ एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने से आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती। पर पाइल भी, आप लोगों ने दूसरे लोगों के कंपैरिजन से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, यू हैव पुश्ड योरसेल्फ, okay, and you still feel that I did so much, but still it feels like I'm still struggling. Why you're struggling? You're struggling because you need to heal your energetic blockages. See, only shifting, only taking different action in your external life will not solve your problem until you heal the energetic blockages. Many of you has this conditioning that I can only uh, achieve success through hard work. और ये कहाँ से आया है? आपको बचपन से आपने सीखा है कि द ओनली वे टू अचीव appreciation, success is through uh, back breaking work, hard work. I need to struggle to succeed. और ये जो आपका ओथ, आपने जो वाव लिया है ना, दैट वाव, ओके, that it could be coming from a generational curse, it could be coming from some kind of generational curse, some kind of ancestral karmic pattern, ये आपने अपने पेरेंट्स के साइड से शायद कैरी फॉरवर्ड किया है कि दे दे चूज स्ट्रगल अननेसेसरी, जो जहां पे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है वहां पे भी दे चूज स्ट्रगल बिकॉज ऑफ देयर पैटर्न, दे डू थिंग्स इन अ डिफिकल्ट वे, जो सिंपल सिंपल तरीके से करा जा सकता है, क्योंकि ये उनका कार्मिक पैटर्न है, ये एंसेस्ट्रल कार्मिक पैटर्न है, ये कुछ जनरेशनल कर्स है दैट यू हैव बीन कैरिंग इनटू योर डीएनए एज वेल, पाई बी। ओके, अगर आपको ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको बोलती हूँ कि क्या है, कि हम जैसे हमारे घर वालों से कुछ अच्छी चीजें डीएनए के थ्रू लेते हैं, राइट, कैरी फॉरवर्ड होता है, कुछ बुरी चीजें भी कैरी फॉरवर्ड होता है, देयर माइंडसेट।
their approach towards life। उनको लगता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, right? But this is not the truth। You do not need to do back-breaking work, you can do smart work and you can still win। You need to know the right way। So बहुत लोगों का क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है, ये पैटर्न है जो जनरेशन से आ रहा है कि दे स्ट्रगल, they feel that only way to achieve success, only way to make money is uh, choosing a path of struggle। That is their belief, that is their karmic pattern, that is their generational curse। इसके वजह से क्या होता है, उनको उनका करियर चॉइसेस जो है वो ऐसा होता है कि स्ट्रगल आता है उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा। उनको लगता है कि आसपास के तो लोग हैं जो कम स्ट्रगल में ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ज्यादा खुश हैं। वाई मेरे लिए लाइफ इतनी स्ट्रगलफुल है? क्योंकि आपका जेनरेशनल कर्स है जो आपके डीएनए के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ये आपके दादा परदादा पूर्वज से, आपके एंसेस्टर्स से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक इट। दैट इज व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो, राइट? अगर आपको नहीं पता जनरेशनल कर्स क्या है, एंसेस्ट्रल कर्मा क्या है, आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है आपके साथ एंड यू नीड टू हील दैट पैटर्न। जब आप ये एनर्जेटिक पैटर्न को हील कर दोगे ना, आपके लाइफ में ग्रोथ जो स्टक हो रही है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके जितना आप एफर्ट देते हो आपका आउटकम क्यों कम है? बिकॉज ऑफ दैट कर्स, दैट कार्मिक पैटर्न। एंड इट इज ओनली अ मेंटल लेवल पे है ये। इसको आप रिलीज कर सकते हो बाय शिफ्टिंग योर पर्सपेक्टिव, बाय डूइंग हीलिंग वर्क, बाय सेटिंग एन इंटेंशन। ओके एंड वर्क, माय एडवाइस विल बी, अगर आप हीलिंग प्रोफेशन से नहीं हो, आपको नहीं पता है एंसेस्ट्रल कर्मा, जनरेशनल कर्स के बारे में, वर्क विद एन एक्सपर्ट। ओके यू कैन रीच आउट टू मी इफ यू फील guided। My WhatsApp number is given in the description, or if you want to work with some other healer, you can do as well। Take what resonates with you। आप अपने intuitions के basis पे action लो, ठीक है? And the approach is okay। So pile B, it's very weird, but yeah, the best way uh, to proceed in your situation is pile B, you need to work on your self worth। आपको आपका जो भी ये कलीग है या जो भी बॉस है, जो भी टीम मेंबर है, उनके नजरिए से अपने आप को देखना बंद करना होगा। सो नाउ यू पीपल हैव पीपल एस्टीम। दैट मीन पीपल एस्टीम मतलब you decide how much worthy you are based on people's validation। You need to break this pattern, break this habit of judging your worth based on what people say about you। And you need to learn to build self esteem। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की जरूरत है कि हाउ आई सी माई सेल्फ, what I believe about myself। And you need to stop letting people tell who you are and what you're capable of। Right? Many of you have a very could have a very unhealed solar plexus, Manipura chakra। आप लोगों का कुछ कंट्रोल का पैटर्न है बचपन से, और वो आपके वर्क लाइफ में भी दिख रहा है, ठीक है? एंड कुछ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप लोगों में से बहुत लोगों का हो सकता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, एडीएचडी, अटेंशन आप लोगों का इधर उधर जा रहा है। अगर ये सिम्टम्स है, दिस रीडिंग इज फॉर श्योर फॉर यू, ठीक है? बहुत सारा चीजें ले लेते हो पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते अगर आप, ठीक है? यू स्टार्ट थिंग्स विथ लॉट ऑफ एनर्जी, देन यू लेफ्ट टास्क अनफिनिश्ड। ओके अगर ऐसी चीजें हैं, pile B, it is a confirmation that this reading is for you। Okay and you need to work on your inner child, you need to work on your self esteem। Only changing the job will not solve the problem, because you many of you could have done it before, but you kept on attracting
toxic work environment, you kept on attracting challenging bosses because you have a soul contract. Okay, so you need to learn the lesson of building your own self esteem. ये पीपल प्लीजिंग एट्रीब्यूट जो आपका है, इसको आपको ब्रेक फ्री करना है. और मेनी ऑफ यू could have this contract that you will going to break this curse. आपके फैमिली का जो ये पैटर्न है, you are the one who need to break the pattern. You could be a cycle breaker. आप लोगों में से बहुत लोग हो सकते हैं कि आप लोगों को हीलिंग में कुछ इंक्लाइनेशन हो, या आप लोगों को एक टेंडेंसी हो रही है कि you want to learn about spiritual healing or other healing modalities. Okay, you could be a cycle breaker of your family, कि आपको आपके फैमिली को इस जो ये जो कर्स है, ये जो पैटर्न है, इससे ब्रेक फ्री कराना है, that pattern of people pleasing. Okay, so pile B, this was your reading. It was very deep. I hope you found it helpful. And if you want one-to-one session, if you want to know more about it, and आपको overwhelming लग रहा है, कुछ लग रहा है आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, because ये reading बहुत deep था, you can reach out if you feel guided to work with me. Okay, take an intuitive action. I always say people ki follow your heart. Your heart knows um, which path to follow. Trust it. Okay. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो you get notified. And take care, Pile B. All the very best. I'll see you next. Bye.